This is the method. Again, it is used to solve a linear programming problem. So it's not just, what is that, concentrate on this procedure, because the procedure what we're going to follow in this simplex method, that is going to be same for all the methods. Slight difference in the methods, but otherwise the same procedure will be followed. For there are 4 methods, so everywhere you'll be following the same procedure. So for that, just pay attention here, because, and if you have, please take one notebook also, because it's better you write and see once. Okay, so when to apply a simplex method? Simplex method is used if the objective function is maximization and all the constraints are less than or equal to, and the right hand side has to be positive, except the non-negativity constraint. The last constraint, what we write, x1, x2, x3 greater than or equal to 0. Other than that, all the constraints should be less than or equal to 0. So simplex method is applied when the objective function is maximization and the constraints are less than or equal to type. Suppose it is greater than or equal to, then you have to convert to less than or equal to and see to it that the right hand side of each constraint is positive. That is also a condition to apply the simplex method. ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन है कि नहीं. अगर नहीं है तो हमको चेंज करना है मैक्सिमाइजेशन में. सी टू इट दैट ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर लेस देन और इक्वल टू टाइप and the last constraint will be greater than or equal to 0. That is a non-negativity constraint. Okay, so I'll explain this method. Take the first problem. Maximize z equal to 7x1 plus 5x2 subject to x1 plus 2x2 less than or equal to 6, 4x1 plus 3x2 less than or equal to 12, and x1, x2 greater than or equal to 0. So I can see both the chats now. You can write your questions or doubts, whatever you have in the chat box. Okay. You have to solve this LPP by using simplex method. Now here in the exam, they will specify the method. So you have to solve only by that particular method. Okay, so they will specify the method that you have to solve this LPP by simplex method or this method or that method. They will specify the method. If it is not specified, then you have to check whether it can be solved by simplex method or any other methods. But generally, you will be having that method specified in the problem. Okay, so now we are going to solve using simplex method. Simplex method, the condition is objective function should be maximization. Objective function should be maximization. That is already there. These are the 2 constraints. This is not called as the constraint. Constraints are only these 2. These 2 are the constraints, and both the constraints are less than or equal to 0, less than or equal to. Right hand side is non-negative, and the last constraint is all the variables greater than or equal to 0. So it satisfies all the conditions of a simplex method. पहला कंडीशन है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स में होना चाहिए, constraints less than or equal. These 2 are called as the constraints. This is called as a non-negativity constraint. अगर हम लोग खाली constraint बोलेंगे तो only these 2 are there. Okay, this is called as a non-negativity constraint. मतलब all the variables are greater than or equal to 0. तो जितने भी constraints हैं वो less than or equal to होने चाहिए, and the right hand side of each constraint should be positive. Once that is done, then you have to convert this LPP to standard form. I think we have done what is standard form, canonical form in the previous lecture. The standard form means all the inequalities are converted to equalities by either adding a slack variable or subtracting a surplus variable. Now, in the case of less than or equal to variable, which variable we add, slack or surplus? You can write the answer in the chat box. अगर लेस देन और इक्वल टू कंस्ट्रेंट है तो हम कौन सा वेरिएबल ऐड करते हैं ताकि वो इक्वल टू साइन हो जाए? सरप्लस का मीनिंग क्या होता है? सरप्लस का मीनिंग होता है कि जो समथिंग इज more on the left hand side, then you're subtracting that surplus variable.
Okay, it is not a surplus variable, it is called as a slack variable. Yes, Anushka, it is a slack variable. Okay, स्लैक का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में समथिंग लेस है, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू, विच मीन्स दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन द राइट हैंड साइड. So you have to add something to the left hand side. That something is called as a slack variable. Now both the inequalities are less than or equal to, so we have to add two slack variables S1 and S2. So next will be, so the first two conditions are satisfied. Now adding slack variables S1 and S2 to these constraints to reduce the given LPP in the standard form. We are reducing this LPP to the standard form by adding the slack variable, or we are converting these inequalities to equality constraint. Okay, we are converting this inequality constraint to equality constraint by slack. S1 S2 is called as a slack. तो slack variable कब add करते हैं, जब less than or equal to constraint होता है. Surplus variable subtract करते हैं जब ये left hand side is greater होता है. When you have to make these two equal, there has to be something added to that. That adding variable is called as a slack variable. So I will rewrite this LPP by adding slack variables S1 and S2. Hope you have this problem with you so that it's easy for us to, because PPT I can accommodate everything together. So in the next one, I've added S1 and S2. जो भी हमारा LPP था, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू था, उसमें मैंने क्या किया, S1 और S2 दो कंस्ट्रेंट्स है, इसीलिए दो स्लैक वेरिएबल्स हमने ऐड किए. And this inequality is now converted to equality constraint. Okay, once you add the slack variable, give the cost as 0 S1 0 S2 so that the Z function is not getting affected. When you add S1 S2 S1 S2 variable over here, give the cost as 0 0 in such a way that your Z, the profit function, is not getting affected by the addition of these slack variables. तो जितने भी स्लैक और सरप्लस वेरिएबल हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका कॉस्ट हमको 0 0 देना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. ठीक है, स्लाइड नंबर 3. Yeah, this is the question given. Same question I would written in the next slide with the, after adding the slack variables S1 and S2. These steps are not required solely for your understanding. चेक करना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन है कि नहीं, कंस्ट्रेंट्स लेस देन और इक्वल टू है कि नहीं, चेक करना है. राइट हैंड साइड पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर लेस देन और इक्वल टू कंस्ट्रेंट है तो हमको स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे. सिंस देयर आर टू कंस्ट्रेंट्स, वी आर एडिंग टू स्लैक वेरिएबल्स S1 and S2. ओके, Darshana, done? Everybody please write down the problem so that we can, एक ही मेथड, एक ही बार मेथड फॉलो करना है. We can apply this method for all the different methods which are there in LPP. Now listen carefully. After adding the slack variable S1, S2, now how many variables are there? X1, X2, S1 and S2. 4 variables हैं. So now we have to form a table with these 4 variables. So I will write the variable. सबसे पहले X1 लिखूंगी मैं, then X2 हो जाएगा, S1, S2. ठीक है, जितने वेरिएबल्स हैं उसको पहले मैंने लिख लिए, X1, X2, S1 and S2. Please listen carefully. This procedure you have to follow for all the methods. तो सबसे पहले जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको लिखना है. उसके बाद हर एक कंस्ट्रेंट में राइट हैंड साइड का पार्ट आता है. दैट राइट हैंड साइड इज डिनोटेड बाय BI. The right hand side of each constraint is denoted by BI. First you write all the variables and the right hand side of each variable is denoted by BI. Now take the first constraint.
take the first constraint, write the coefficients of x1, x2, s1, s2 in the first row, as the first row. Write the coefficients of x1, x2, s1, s2. तो x1 का कोएफिशिएंट फर्स्ट कंस्ट्रेंट में 1 है, x2 का कोएफिशिएंट फर्स्ट कंस्ट्रेंट में 2 है, s1 का कोएफिशिएंट 1 है, s2 is not there, so I will write as 0 और right hand side first constraint का 6 है. ओके सो जितने भी वेरिएबल्स हैं पहले हमको वेरिएबल्स लिखने हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड वाला पार्ट को बी आई डिनोट करना है एंड जितने भी वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं उसको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट रो, फर्स्ट कंस्ट्रेंट फर्स्ट रो, सेकंड कंस्ट्रेंट सेकंड रो. Okay, now take the second constraint. Second constraint also you write the coefficients of x1, x2, s1, s2 as the second row. So 4, 3, s1 is not there in the second constraint. So 0, 1 and right hand side is 12. ठीक है, समझ में आ गया क्या किया हमने पहले वाले इसमें? जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको हमें लिखना है एंड देन टेक द कंस्ट्रेंट्स. First constraint will represent the first row, second constraint, second row. Write the coefficients of these variables as the first row and the second row. Okay, till here clear? पहले हमको constraints का part लिखना है. उसके बाद now we are having x1, x2, s1, s2 in the objective function also. तो उसको हमें denote करना है. These are the cost coefficients. Okay, 7, 5, 0, 0. They are called as the cost coefficient. तो उसको हम डिनोट करते हैं CJ. दिस इज BI, दिस इज CJ. CJ इज द कॉस्ट ऑफ दीज वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो x1 का कोएफिशिएंट x1 के ऊपर लिखना है 7, x2 के ऊपर लिखना है 5, s1 के नीचे ऊपर 0, s2 के ऊपर 0. Okay, so whatever was given in the LPP that we have written in the form of a table first. जो भी दिया था coefficients of x1, x2, s1, s2, right hand side and the cost coefficient. Right hand side is denoted by BI and the cost coefficient is denoted by CJ. Clear up यहाँ तक clear है सबको? ठीक है, सबसे पहले हमको टेबल जितने वेरिएबल्स हैं उतने वेरिएबल्स लिख के टेबल बनाना है. After writing all the data from the LPP to the table, next column will be XB column. Okay, now XB column हमें कैसे लिखना है? Once you write all the variables, you will find a unit matrix. अभी जैसे यहाँ पे 1 0 0 1, you will have a unit matrix 1 0 0 1. So 1 0 corresponds to the column S1. तो यहाँ पे हमको लिखना है S1. ठीक है, whenever after entering all the coefficients of the variables, you will find जितने constraints हैं that many order you will get a unit matrix. So we have 2 constraints, so you will be getting 2 or a unit matrix of order 2. So now 1 0 0 1, 1 0 is corresponding to S1, 0 1 is corresponding to S2. तो यहाँ पे हमने S2 लिखा, मतलब जहाँ पे 1 है उसके अगेंस्ट जो वेरिएबल ऊपर है उसको यहाँ पे लिखना है एंड यहाँ पे S2 के यहाँ पे 1 है तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे S2 लिखना है. ओके, 1 0 इज करस्पॉन्डिंग टू S1, तो जहाँ पे 1 है उसके यहाँ पे XB के नीचे S1 लिखना है एंड 0 1 के यहाँ पे S2 लिखना है. ओके, क्लियर हो गई क्या करना है, S1 S2 कैसे लिखना है, समझ में आया? यू हैव टू, जितने कंस्ट्रेंट्स हैं दैट मेनी order unit matrix you will get after writing all the coefficients. So here we have 2 constraints, which means that we will get 2, that is a unit matrix of order 2. उसके बाद ये लिखने के बाद, now what is the cost we have taken to S1 S2, that is given as CB. This is the variables in the basis. This is the cost of the variables in the basis. जो यहाँ पे है उसका cost यहाँ पे लिखना है. तो हमने S1 के ऊपर 0 लिखा है तो यहाँ 0 आ जाएगा, S2 के ऊपर 0 लिखा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. Okay, clear all of you? If you have any doubt, please ask. Or you can write in the chat box. सबसे पहले write all the variables from the constraints from the objective function. Right hand side is denoted by BI. The costs are denoted by CJ. Once you write all the coefficients, you have to check for the unit matrix. Depending upon the constraint, that order unit matrix will be present in the
table. So 1 0 is corresponding to the column S1. So I'll write S1 over here. 0 1 is corresponding to the column S2. So S2 यहाँ पे आ जाएगा और फिर S1 S जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे हैं उसके कॉस्ट हमको लिखने हैं S1 S2. तो यहाँ पे आ जाएगा 0 and 0. ओके उसके बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट इज ZJ. Okay, now see there are so many reference books. Every book they have solved in different method. Kumbhojkar has a different method, so don't confuse. Follow only one method. Siley, previous slide I'll do it little bit later because I'm explaining this table. So first understand this table. Previous slide I'll show it afterwards. Okay, उसके बाद हमको लिखना है ZJ. Now ZJ क्या होता है? For each column you have to write ZJ. We don't require it for BI column, but जितने variables हैं उसका हर एक का ZJ लिखना है. So what we will do is, now 0 is the CB and this is the corresponding X1. So 0 into 1 plus 0 into 4. It is summation of CB into XI column. ठीक है? 0 into 1 plus 0 into 4. 0 into 1 plus 0 into 4 हो जाता है 0. Next we have second column. जितने भी CB है हर एक कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट X2 के लिए लिखना है तो 0 into 2 plus 0 into 3. Again that is 0. 0 into 1 plus 0 into 0. That is going to be 0. ठीक है? क्लियर? ZJ कॉलम ZJ रो कैसे लिखा हमने? ZJ हमने कैसे लिखा? We have multiplied the CB and the corresponding elements in the XI's column, जितने भी वेरिएबल उसके कॉलम को. तो 0 into 1 plus 0 into 4. तो इनिशियली सब 0 ही होगा यहाँ पे. 0 0 0 लिख देना यहाँ पे. Simplex में it is going to be 0 because we have 0 over here. So 0 into 1 plus 0 into 4 0. 0 into 2 plus 0 into हर एक कॉलम के लिए हमें ये एलिमेंट्स को 0 से मल्टीप्लाई करना है. आंसर नीचे लिखना है. Okay, next we have to calculate ZJ minus CJ. Next we have to calculate ZJ minus CJ. Now ZJ again हर एक कॉलम के लिए लिखना है. ZJ for the first column is 0, CJ is 7. तो 0 minus 7, that is minus 7. 0 minus 5 for the second column, 0 minus 5, that is minus 5. 0 minus 0, 0 minus 0. जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके लिए हमने ZJ निकालना है और उसके बाद ZJ minus CJ. CJ is the first row, the top row. CJ वाला जो रो है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. ZJ minus CJ. Clear this initial table? Any doubt? CB. CB क्या होता है? जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स S1 जो हमें 1 0 0 1 होता है ना, S1 S2, हमें देखना है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ S1 S2 इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो हमने 0 0 दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 0 0 दिया है वो हमको यहाँ पे लिखना है 0 and 0. दैट इज द CB कॉलम. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, एक बार ये होने के बाद नाउ if you get all the ZJ minus CJ's rows positive or 0, then we cannot proceed further. Okay, ZJ minus CJ, all the values of ZJ minus CJ's, if they are greater than or equal to 0, then we cannot proceed further, or we have reached the final table. Once you get all ZJ minus CJ's positive or 0, which means that we have reached the final table. Until you get ZJ minus CJ's all positive, you have to continue the process. Okay, you have to continue the process. Okay, अभी हमें क्या करना है? यहाँ पे 2 नेगेटिव है, बाकी तो 0 0 है. यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो हमें क्या चूज करना है? मोस्ट नेगेटिव. मोस्ट नेगेटिव का मतलब होता है विदाउट नेगेटिव साइन जो बड़ा नंबर है.
ठीक है, नॉट -7 -5 से बड़ा नंबर नहीं लिखना है हमको। मोस्ट नेगेटिव मतलब जस्ट लीव आउट दिस माइनस साइन, विच एवर नंबर इज ग्रेटर दैट विल बिकम द मोस्ट नेगेटिव नंबर. So here the most negative number is -7. So the first row becomes the key, first column becomes the key column. ओके, तो यहाँ पे -7 और -5 दो नेगेटिव नंबर्स हैं. दोनों नेगेटिव नंबर्स से जो मोस्ट नेगेटिव बोलते हैं, मोस्ट नेगेटिव का मतलब होता है कि विदाउट दिस नेगेटिव साइन, अगर नेगेटिव साइन नहीं कंसिडर किया तो 7 और 5 में जो बड़ा है दैट विल बिकम एज अ मोस्ट नेगेटिव नंबर. Now, most negative is -7. That means the first column is becoming the key column. First column is called as the key column. Once you get the key column, see how many constraints are there. Only 1 and 4. है ना, ये दो नंबर ही है 1 and 4. इसको नहीं लेना हमको. ठीक है, if I take the x1 column, जो दो constraints है, they are 1 and 4. Then you have to take the ratio of bi's upon the corresponding elements in the key column. You have to take the ratio of, हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया की कॉलम, फर्स्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उसका रेशियो लेना. व्हाट इज दैट? हाँ, नॉट क्लियर. क्या बोल रहे हैं? I'm not able to hear clearly. यार अभी क्या सब बता दे. Hello? ये वाइट बन गई. Okay, so we have to take the ratio of bi's upon the corresponding elements in the key column. And when you take the ratio, make sure that only positive number का ratio लेना है. अगर यहाँ पे कोई भी नंबर 0 है या माइनस में है तो उसको रेशियो में इंक्लूड नहीं करना है. Here both the numbers are positive, so I can take the ratio as 6/1. की कॉलम में 2 है, 1 है, करस्पॉन्डिंग टू बी आई 6 है, तो 6/1 दैट इज 6 एंड 12/4 दैट इज इक्वल टू 3. ओके, उसके बाद ये दो रेशियो में जो मिनिमम वैल्यू है उसको चूज करना है. नाउ 6 और 3 में मिनिमम वैल्यू इज 3, सो दिस रो विल बिकम द की रो. ठीक है, मोस्ट नेगेटिव में से हमको की कॉलम मिलता है और मिनिमम रेशियो में से हमको की रो मिलता है. The intersection of key column and key row is called as the key element. The intersection of the key row and the key column is called as the key element. This is the first basic table. Okay, if you write this basic table correctly, mostly out of 8 we are giving 3 marks for this basic table. ओके, उसके बाद हमको प्रोसीड करना है, लेकिन दिस इज द बेसिक इनिशियल बेसिक टेबल. एनी डाउट इन दिस टेबल? एक बार ये समझ में आ गया देन इट इज इजी टू कंटिन्यू विद दैट. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. हर्षद, एनी डाउट? आया समझ में कैसे करना है? रेशियो टेबल. रेशियो हमें किसका लेना है? पहले हमको की कॉलम निकालना है. ठीक है, की कॉलम निकालने के बाद देयर आर 2 कंस्ट्रेंट्स है ना, तो ये दो कॉलम, ये दो रो हमको चेक, तो ये दो रो में बी आईज है, तो जो बी आई जहां पर है उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उसको लेना है. उसमें से भी ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिसका जो पॉजिटिव है. हमको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो पॉजिटिव है. वी हैव टू टेक द रेशियोज ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर्स, नो जीरो नो नेगेटिव इन द की कॉलम. की कॉलम में अगर पॉजिटिव नंबर है तो ही हमको रेशियो लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है. ठीक है, तो बी आई यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे है 1, तो 6/1. की कॉलम चूज करने के बाद हमको रेशियो लेना है. एक बार एक कॉलम हमारा फिक्स हो गया तो वो कॉलम में जितने नंबर्स हैं उसका हमें रेशियो लेना है. तो 6/1 इज 6, 12/4 इज 3. फिर ये दोनों में जो मिनिमम है
So this is 3 is minimum and 3 is corresponding to the second row. So second row becomes the key row and the intersection of key row and key column. Key row is the first row. Key column is the first row. Key row is the second row. And then intersection of key row and key column is called as the key element. Clear now? Disha and Swastik. Yeah, Harshad, please mute yourself. Correct. Harshad, what is he doing? So inform him to mute himself so that background sound आ रहा है वहां से. स्वस्तिक क्लियर हुआ? दिशा ऑल्सो क्लियर? यहाँ पे किसने पूछा है? शीतल सीबी समझ में आया अभी? जो भी वेरिएबल्स हम यहाँ पे लिखते हैं उसका जो हर्षद प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अरे मरताना का तुला पप्पा जाणार आहे पाहिजेत का दोघे एकत्र मारणार आहे सर मेंटल डोकी ओके सीबी कॉलम जो है दैट इज द कॉस्ट ऑफ द वेरिएबल्स हियर. कॉस्ट मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने जो 0 दिया है दैट हैज टू बी रिटन ओवर हियर सीबी कॉलम. ओके शीतल ठीक है. ओके शैल आई मूव टू द नेक्स्ट टेबल नाउ. तो यहां तक सबको आगे जैसे बेसिक टेबल. हर एक मेथड में हमको ऐसे ही बेसिक टेबल फॉर्म करना है. सबसे पहले वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, फिर बीआई लिखना है, सीजे लिखना है, एक्सबी लिखना है, सीबी लिखना है, जेडजे एंड जेडजे माइनस सीजे. चूज द की कॉलम, की रो, इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम इज इक्वल टू द की एलिमेंट. यहां तक पहला टेबल हमको करना है. उसके बाद जो हमारा की एलिमेंट है ओनली दिस इज द फर्स्ट टेबल. उसके बाद एवरीथिंग लिखने की जरूरत नहीं है. जो हमारा की कॉलम की एलिमेंट है उसको 1 करना है. whatever is the key element, make the key element 1 by dividing the entire row by 4. You have to make the key element 1 by dividing only by this transformation. You have to make the element 1. You cannot interchange, you cannot do any other transformations. You have to make this element 1 only by dividing the second row by 4. जहां पे भी वो एलिमेंट है वो रो को हम वो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. ओके नाउ इन द नेक्स्ट टेबल वी विल नॉट राइट सीजे, वी विल नॉट राइट सीबी एंड वी विल नॉट राइट जेडजे. सो इन द नेक्स्ट टेबल सीजे को हम लोग रिमूव करेंगे, सीबी को रिमूव करेंगे और जेडजे को रिमूव करेंगे. वी विल हैव ओनली 3 रोज. ओके सो आई विल राइट द नेक्स्ट टेबल. वी आर डिवाइडिंग दिस रो बाय 4. तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/4 और ये वाला टाइम पार्ट हो जाएगा 3. So I'm writing the next table as after dividing the second row by 4. इतना ही हमको लिखना है now. We don't require any other numbers except these values. मतलब XB का भी ले सकते हैं चाहिए तो. ओके जो प्रीवियस टेबल में था उसमें हमने खाली सेकेंड रो को 4 से डिवाइड किया है और जो आंसर आया उसको मैंने ये टेबल पे लिख दिया है. बाकी सब सेम रखा है. So leaving that CJ column, CB column, etc. and ratio column also, we have only this much is the required for calculation. Other things we are not using that CB columns hereafter. Okay, only in the first table we'll require that CB column. Once that is written, then we can do by row and row transformations only. Okay, so which was the key element? ये हमारा key element था, है ना? This was the key element, I think. 1 second. This is the key element. If I'm able to write it, I'll see. This part is the key element, है ना? This is the key element. The mouse is not very good. Okay, this is the key element. तो हमें ये एलिमेंट को 1 किया है ना. बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कॉलम में उसको 0 करना है by using row transformations.
ओके, जो की एलिमेंट है उसको वन किया है हमने. हम कैसे वन किया है? बाय डिवाइडिंग दैट एंटायर रो बाय 4. नाउ जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कॉलम में अदर देन दिस वन, मेक दोस टू एलिमेंट जीरो बाय यूजिंग नॉर्मल रो ट्रांसफॉर्मेशन. अगर मुझे इसको जीरो करना है तो व्हाट विल बी द रो ट्रांसफॉर्मेशन? R1 minus R2. Can I write R1 minus R2? Because you have to make this element zero by using this element. अगर मैंने 1 minus 1 किया तो zero आ जाता है. तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं R1 minus R2. When I write R1, that means R1 row will change. अगर मुझे -7 को जीरो करना है तो what is the row transformation? अगर मुझे -7 को जीरो करना है, so what is the row transformation? Either you can write or you can unmute yourself and Ma'am, tell. 7 R1 minus. नहीं, R1 का हो गया. R1 हमने ऑलरेडी इसको जीरो करने के लिए यूज दिस. नाउ वी हैव टू यूज R3. ये थर्ड कॉलम, थर्ड रो है. दिस इज द फर्स्ट रो, सेकेंड रो. हाँ, R3 प्लस 7R2, क्योंकि हम इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा. तो आई विल राइट R3 प्लस 7R2. ठीक है, हमें खाली ये कॉलम देखना है. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस. जो भी हमारा की एलिमेंट है, वो की एलिमेंट के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो कॉलम में, उसको हमें जीरो पुट करना है, जीरो लाना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो पहले हम लोग पहला वाला नंबर लेंगे. दिस एलिमेंट इज देयर इन द फर्स्ट रो, तो वी आर गोइंग टू यूज. अगर मैंने 1 माइनस 1 किया तो जीरो हो जाता है. तो इट इज R1 माइनस R2, फर्स्ट रो माइनस द सेकेंड रो. अगर मुझे इसको जीरो करना है, दिस इज द थर्ड रो, तो आई राइट R3 प्लस. इसको यूज करके ही हम, ये चेंज नहीं होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये वैसे के वैसे ही रहेगा, ओनली दीज टू एलिमेंट्स विल चेंज. सो R3 प्लस 7R2. तो रीराइटिंग द कॉलम अगेन. तो सबसे पहले जो वो है उसको वैसे ही रखेंगे. ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द फर्स्ट रो. फर्स्ट रो हमें क्या करना है? R1 माइनस R2. R1 में 1 है, R2 में 1 है, तो 1 माइनस 1, पहला एलिमेंट जीरो. व्हाट इज द सेकेंड एलिमेंट? सेकेंड एलिमेंट में R1 में 2 है, R2 में 3 माइनस 4 है. सो हाउ मच इज 2 माइनस 3 बाई 4? R1 में 2 है, R2 में 3 बाई 4 है. सो R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 बाई 4. सो हाउ मच इज 2 माइनस 3 बाई 4? 2 minus 3 by 4 is how much? 5 by 4. Yes. Okay? 5 by 4. तो नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 5 by 4. उसके बाद क्या करना है? थर्ड रो, थर्ड कॉलम लेना है. अगेन R1 minus R2 is 1 minus 0. 1 minus 0 is again 1. फोर्थ कॉलम में क्या होगा? 0 minus 1 by 4. 0 minus 1 by 4 हो जाएगा minus 1 by 4. Then we will have 6 minus 3, that is equal to 3. ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स R1 में थे उसको हमने R2 से सब्ट्रैक्ट किया है. तो 1 minus 1, that is 0. 2 minus 3 by 4. Why we are doing this? Because we have used this transformation. R1 minus R2. So 2 minus 3 by 4 is 5 by 4. 1 minus 0, 0 minus 1 by 4, and 6 minus 3. So what is the third one then? This number -7 plus 7. अभी हमको लेना है R3. R3 में क्या करना है? R3 में -7 है, R2 में 1 है, तो -7 plus 7 into 1, that becomes 0. What is the next element? -5 plus 7 into 3 by 4. -5 plus 7 into 3 by 4. How much is that? 1 by 4. हाँ? 1 by 4. 4 है, ओके, 1 by 4. ठीक है, उसके बाद वाला थर्ड कॉलम, 0 minus 7 into 0, that is 0 itself. Then 0 plus 7 by 4, that will become 7 by 4. ठीक है, right है, first row और third row. तो what we have done, once you make the key element 1, the remaining elements in that column are to be made 0 by using row transformations. Okay, by using the row transformation.
तो हमने पहले एलिमेंट को जीरो करने के लिए R1 माइनस R2 किया और इसको जीरो करने के लिए R3 प्लस 7R2 किया एंड वी हैव गॉट द न्यू फर्स्ट रो एंड द थर्ड रो. ठीक है, एक बार ये पूरा टेबल आ गया. नाउ वी हैव टू राइट XB. Now tell me which variables will come in XB column. 1 0 corresponds to which variable? फिर से whenever you simplify, you will have always a unit matrix of order 2 at the end of the table. So 1 0 corresponding to which variable? X1 and S1. Yes, 1 0 is corresponding to 1 0 is corresponding to S1. तो यहां पे हो जाएगा S1. 0 1 corresponds to X1. 0 1 corresponds to X1. So पहले S1 S2 था. Now it has become S1 and X1. ठीक है, X1 and X1. And then the last, we know it is equal to Zj minus Cj. Zj minus Cj. Okay. Now, if you see now Zj minus Cj, all the elements of Zj minus Cj's are either 0 or positive. Since all Zj minus Cj's are greater than or equal to 0, we can say that we have reached the final table. Now we have to write the solution from this table. Once you get XB में से अभी देखो, we are having only first two row for the constraint. जो BI में खाली यही दो है ना, यहाँ पे कुछ नहीं आता है. तो first two row में 1 0 0 1 आना ही चाहिए. Whenever you complete one table, you will get a unit matrix of order 2 if you have two constraints. तो 1 0 is corresponding to S1. तो यहाँ पे S1 लिखेंगे. 0 1 is corresponding to X1. तो यहाँ पे X1 लिखेंगे. पहले हमारा 1 0 S1 था, 0 1 S2 था. So we had initially S1 S2. Now 1 0 is remaining same S1, but 0 1 it has become now X1. And we have also got the Zj minus Cj's are all positive and 0. Clear, Harsh? जैसा हमने पहले XB लिखा था वैसे हमको XB लिखना है यहाँ पे भी. Okay, now since all Zj minus Cj's are greater than or equal to 0, solution. Now solution, कितने variables दिए थे question में? How many variables were given in the question? Only X1 and X2. We have added two variables S1 and S2, but we were given only two variables X1 and X2, which means that only those का answer हमको लिखना है. What is the value of X1? What is the value of X2? Now, if I see the XB column, only X1 is coming here. X2 is not coming, which means that X1 value जो है, that is equal to 3. X2 is not coming in the XB column, so X2 value will be equal to 0. Okay, corresponding to this variable, just see the BI column. X1 is equal to 3. X2 is not here, which means that X2 is equal to 0. Substituting everything in the maximize Z function, we will get the answer as 21. They are little bit, these are lengthy problems, I do understand, but still only one procedure you have to follow. They can change only the numbers, nothing else they can change. Just if you know the procedure, you can solve any type of problems. अभी पूछो कुछ और डाउट है, अदरवाइज आई कैन गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम सो दैट अगेन और थोड़ा क्लियर हो जाएगा. इनिशियल टेबल लिखने के बाद हमें की एलिमेंट को 1 करना है, बाकी सब एलिमेंट्स को 0 करने हैं वो रो में, और उसके बाद वी हैव टू चेक ऑलवेज. अगर यहाँ पे फिर से नेगेटिव आया तो अगेन चूज द की कॉलम, की रो, की एलिमेंट, मेक द की एलिमेंट 1, कंटिन्यू द सेम प्रोसीजर व्हाट यू हैव डन फॉर द फर्स्ट टेबल. Till you get all Zj minus Cj is greater than or equal to 0, you have to continue that process. ठीक है? We'll take one more problem so that और clear हो जाएगा. X1. यहाँ पे X1 0. See, there are two. You should always get a unit matrix of order 2. तो 1 0 0 1 है. 1 0
किसके ऊपर कौन से कॉलम में 1 0 है, S1 कॉलम, तो यहाँ पे हमको S1 लिखना है। 0 1 कहाँ पे है, X1 में, तो 0 1 के यहाँ पे X1 लिखना है, और फिर X1 की जो वैल्यू यहाँ पे आती है, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। X1 is equal to 3. Actually, the answer is S1 equal to 3, but we don't want the value of S1. We want the values of only X1 and X2. इसलिए हम लोग S1 S2 यहाँ पे लिखते नहीं है, जो हमको क्वेश्चन में दिया था वही वेरिएबल्स के हम लोग वैल्यूज लिखते हैं। अगर यहाँ पे वेरिएबल नहीं आ रहा है तो इट इज द वैल्यूज इक्वल टू 0। ओके भरत, एनी डाउट? डिविजन ए, I'm not seeing any chats. No doubts are asked in the chats, but okay, we'll take one more problem. Got it? Okay, fine. थोड़ा कंफ्यूज, बिकॉज इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, यू मे हैव स्लाइट कंफ्यूजन। एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट हियर। 4 methods are there totally. So those 4 methods you have to follow the same procedure. थोड़े changes होंगे, but otherwise the procedure will be the same. You have to choose the key column, key row, key element, make the key element 1 by dividing the entire row by that particular number. Everything will be the same. Okay, take the next one. Maximize z equal to 2x1 plus x2 subject to x1 minus x2 less than or equal to 10, 2x1 minus x2 less than or equal to 40, x1 x2 greater than or equal to 0. Need not study this time. Once you know the procedure, you can do any type of problem here. They will change only the numbers, nothing else. And simplex is the most often repeated question in the exam. Okay. पहला condition क्या है simplex के लिए? Objective function maximization, constraints less than or equal to. So here we have, and right hand side also positive. Everything is satisfying here. Again, we have 2 constraints. So adding 2 slack variables S1 and S2. Same as the previous one. चेक करना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन है कि नहीं, एंड चेक करना है कंस्ट्रेंट्स लेस देन और इक्वल टू है कि नहीं, और अगर लेस देन और इक्वल टू है तो ऐड स्लैक वेरिएबल S1 and S2 because there are 2 constraints, adding the slack variables S1 and S2. Okay, so I've just written that next step, adding the slack variables S1 and S2. फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जितने वेरिएबल्स हैं उसको लिखना है। उसको कहते हैं सेकेंड में लिखो, यहाँ पे लिखो, ठीक है। ऊपर जो है वो सीजे का पार्ट आता है, जितने वेरिएबल्स हैं उसको लिखो। यू फॉर्म द टेबल आफ्टरवर्ड्स, आई हैव फॉर्म द टेबल बिफोर हियर, but you can form the table afterwards. Write all the variables here. So how many variables are there? X1, X2, S1, S2. जितने वेरिएबल्स हैं पहले हमें उसको लिखना है। उसके बाद राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखना है, दैट इज डिनोटेड बाय BI. ओके, सो फर्स्ट क्या करना है, जितने वेरिएबल्स हैं उसको लिखना है X1, देन यू फॉर्म द टेबल. डोंट फॉर्म द टेबल इन द बिगिनिंग. फर्स्ट यू राइट ऑल द वेरिएबल्स एंड अकॉर्डिंगली यू ड्रॉ द लाइंस आफ्टर writing the variables. Now take the first constraint. First constraint में write the coefficients of x1, x2, s1 and s2. Okay, write the coefficients of all the variables from equation or from the first constraint. So 1, -1, 1, 0 and 10. Okay, so 1, the coefficient of x1 is 1, x2 is -1, s1 is 1, s2 is not there in the first constraint, that becomes 0. And the right hand side is 10. Second, 2, just do it along with me so that it will be clear. -1, s1 is not there in the second constraint, s2 and then 40. ठीक है, पहले सब वेरिएबल्स लिखने हैं और हर एक वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उसको हमें लिखना है फर्स्ट कंस्ट्रेंट और सेकंड कंस्ट्रेंट से. वी शुड नॉट टेक दिस कंस्ट्रेंट, दिस इज नॉट यूज्ड एनीवेयर, ओनली द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कंस्ट्रेंट्स. इक्वालिटी जो कंस्ट्रेंट्स है उसको लिखना है.
उसके बाद now write the coefficients of x1, x2, s1, s2. Now we are giving the cost as 0, 0 because it should not affect the objective function. अगर हमारा जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है वहां पे s1, s2 इफेक्ट नहीं होना चाहिए. Okay, so for that purpose we are giving the cost as initially 0 and 0. So next will be Cj. Cj क्या होता है? It is the cost, it is the coefficients of x1, x2, s1, s2 from the objective function. So 2, 1, 0, 0. ठीक है. उसके बाद क्या लिखना है हमको? After writing this, next step is xb. xb क्या होता है? Once you write this, you will find a unit matrix of order 2, 1, 0, 0, 1. Okay, 1, 0 is corresponding to s1. तो next हमको लिखना है xb column. xb column में पहला आ जाएगा s1, 0, 1 is corresponding to s2. Okay, 0, 1 is corresponding to s2. Now we have to write the cost of these variables in the basis, which is denoted by CB. XB is the variables, sorry, in the basis, and CB is the cost of the variables in the basis. उसके बाद उसका तो 0, 0 है because we are having 0, 0 here. S1 के ऊपर 0 है, S2 के ऊपर 0 है. ओके, यहां तक हो गया. उसके बाद हमको लिखना है ZJ. ZJ कैसे निकालते हैं? CB into XI, 0 into 1 plus 0 into 2, that is equal to 0. 0 into minus 1 plus 0 into minus 1, 0. 0 into 1 plus 0 into 0, 0 into 0 plus 0 into 1, and then that's it. We're writing for all the columns. उसके बाद write ZJ minus CJ. ZJ minus CJ. Zj is this row, Cj is the topmost row. Now subtracting it, 0 minus 2, minus 2. 0 minus 1, minus 1. 0 and 0. Okay. So we have written all those all these values in the table. After writing Zj minus Cj, check for the values in the Zj minus Cj row. If all are positive, you can stop with that. But if you have negative, then you have to choose the most negative number. So which one is the most negative number in this case? It is not greater, it is not smaller number. It is the most negative. So which one is the most negative number? Minus 2. Minus 2. Yes, A division also. Hope all it's clear for you, right? I'm not seeing anything in the chat. Yes, ma'am. Minus 2 right है ना? Okay. So minus 2. मतलब जो पहला column है, that will become the key column. Okay. पहला वाला जो column है, that is the key column. Next. After key column, you have to identify the key row. To identify the key row, we have to take the ratio. Ratio किसका लेना है? जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, उसका रेशियो करस्पॉन्डिंग टू दिस BIs लेना है. मतलब 10/1, 40/2. 10/1 and 40/2. Okay, take the ratios of only, this has to be a positive number only. Even zeros are not allowed. Okay, zeros are not allowed, minus signs are not allowed. Whatever is BI divided by the positive numbers in the key column. Now we have to choose the what is that minimum one. 10 and 20 में जो minimum है, that we have to choose. So 10 is the minimum. The first row becomes the key row. First row becomes the key row. First row becomes the key row. ठीक है? Now the intersection of key row and key column is called as the key element. तो key element हमारा ये वाला part हो जाएगा, है ना? This pen is not working properly. Okay, so this will become our key element. ये जो है, this is the key element. So the mouse issue, I'm not able to draw this here. Okay, so this part is the key element.
सो नेक्स्ट स्टेप, वंस यू गेट द की एलिमेंट, हमको क्या करना होता है, की एलिमेंट को 1 करना होता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल टू 1 है. Once you write the first table, once you get the key element, this is the key element. Once you get the key element, we have to make the key element 1 in the next step. लेकिन यहाँ पे already key element is equal to 1, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. Now हमें कौन कौन से rows and columns को omit करना है? We don't require CJ row, we don't require CB row, and we don't require ZJ. Even this also can be neglected in the second case, or we can do it afterwards. तो हमें खाली इतना लगेगा. दिस इज द की एलिमेंट एंड वी विल हैव ओनली दिस मच पार्ट. ठीक है, तो मैंने ये टेबल में क्या किया है, सीजे वाला रो निकाल दिया है, सीबी वाला रो निकाल दिया है, एंड जेड वाला रो निकाल दिया है. रेशियो आल्सो इज, दिस इज द रिक्वायर्ड टेबल व्हिच और वी हैव टू अप्लाई रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस. ओके, abhi key element is this one. You have to make these two elements 0 by using this one and using the row transformation. So second row को change करना है और third row को change करना है. So what are, just please write this table in your notebook, because in the next step we have to use the row transformation and write the answer there. So first tell me what will be the row transformation. अगर मुझे इसको 0 करना है using this one, so it will be R2. क्या होगा? How to make this 2 0? अगर मुझे इसको 0 करना है तो हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे? यस, R2 minus 2R1. अगर मुझे इसको 0 करना है तो R2 plus 2R1, है ना. इसको तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज 0. इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0. तो इट इज R2 minus 2R1 and here R3 plus 2R1. So please take this table, because in the next step I have not included this table actually. I forgot to include that. Okay. So first row will remain the same. Okay, first row will remain the same. Now use the transformation. All of you are having this table with you, no? So I can go to the next table. So in the next table, I've used the row transformation, R2 minus 2R1 and R3 plus 2R1. Okay? This transformation. So I'll write all the variables again. First row हमको वैसे ही रखना है. Tell me what is the second row. Second row का first element क्या होगा? Because I'm not having that here. 0 है second row का. Yes, Manish, you are right. So tell me what will be the value of first element in the second row. What is this element? Harsh is saying 0. What about others? It is going to be 0 because we are using the row transformation according to that. ठीक है. Second element क्या होगा? Second element R2 minus 2R1 अगर हमने second column के लिए किया तो what is the second element? 1 आ रहा है. Let me check my answer. It is 1. Third में क्या आ रहा है? Third element -2. Okay, -2. ठीक है, मेरा भी वेरीफाई हो जा रहा है. Fourth element is 1. Okay, and the last BI column 20. Fine. ठीक है, 20 आ गया. Similarly, tell me the third row also. Tell me the third row. Yes, 0. Then second element 0 minus 3, 0, 0. Okay, let me check mine case. 0. I've got third as 2. Yes, you are getting 0, 0. 2 ही आ रहा है ना. चेक कर लो वैल्यूज. ठीक है, 2 है ना. ठीक है.
S2 के नीचे 0 हो जाएगा. ओके, सो नाउ XB कॉलम में कौन कौन से वेरिएबल्स आएंगे बताओ. -2 इज देयर ना. -2 है कि 2 है. हाँ सॉरी, वो भी आ जाएगा. लास्ट 20 है ना लास्ट में. हाँ, यहाँ पे क्या 20 बराबर है कि नहीं. दिस पार्ट, दिस इज राइट ना. आई थिंक इट वाज क्या था पहले इसमें. आई डोंट रिमेम्बर दैट. वी रोट 40 दे. कहाँ पे 40 लिखा था हमने. 1 सेकेंड, आई जस्ट चेक दैट. पूरा पीछे जाना मतलब आई हैव टू. सॉरी, यहाँ 40 है ना. 40 minus 20, that becomes 20. 40 था ना, तो 40 को हमें R2 minus 2 R1 करना है. तो 40 minus 20 is 20 in the next slide. No, only BI. We are taking this ratio. We are taking only BI का column. We are taking only BI का column ना. This is only to choose the key row. Okay, it is not to change the value. Whatever is the value given, that has to be that will remain same only. Okay, this is only to just calculate the key row. Understood, Ronak? हाँ, ठीक है. तो I'll move to the next slide. Okay, तो first table तो हमारा हो गया था. Almost time. I'll just complete this. Tell me which variables are there in the XB column. कौन कौन से variables रहेंगे XB में. 2x2 यूनिट मैट्रिक्स है कि नहीं चेक कर लो. या प्रणाली. X1 and S2. Yes, x1. 1 0 is corresponding to x1 and 0 1 is corresponding to s2. ये वाला हो गया. Okay, then zj minus cj column. Now still we are having one negative number here. है ना? Still we are having one negative number. So again you have to choose the most negative number. So again second row will become the key column. Second column will become the key column. जब तक last row positive या zero नहीं आता है, we have to continue that. Then the ratio we have to take. Again ratios are taken for positive numbers. यहाँ पे एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है.